So good evening everyone. New faces. केबे join कलो? starting में join हो चुका है time होता है exam time होता है आज ये direct class में को एग्जाम सब देलानी? last सीजीएल दिथिलो? केबे join हेलो? Okay, so we'll start weekly current affairs 11th May रू 13th May रू 18th May पर्यंत MCQ format रे हमें generally cover करू एक class रे. Okay, so try to answer and so that तमने निजे को भी judge करी परिवो कि तमे को level रे अच्छो. Are you updated with the current affairs or not? Okay, so I'll show you the question. You try to answer. You may be wrong, that doesn't matter, but try to answer. Okay. Okay, so this is the first question. What is the name of scheme that allows duty-free import of inputs used in the production of export goods? Export जो सामान गुड़ा को हमें export करूचु, हैला? गोटे स्कीम रो ना वर्तमान रिसेंट एटा न्यूज रे थिला. हमें लास्ट वीक रो करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स माने एटा लास्ट वीक रो न्यूज गोटे, हैला? ता माने गोटे नुवा स्कीम maybe launch heji or maybe that scheme is in news. Okay, so kaun karuchi se scheme? It allows duty free import of inputs in the production of export goods. Export good ro production रे जो input दरकार ता पई से duty free import दोची. माने तमे import करि परिबो बट तुमको टैक्स पड़िबोनी, हैला? इंपोर्ट करि परिबो बट टैक्स पड़िबोनी. से स्कीम रो नाटा कोन? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ट्राई करो. क्वेश्चन बुझलो? एक्सपोर्ट करिबा एक्सपोर्ट गुड्स रो प्रोडक्शन पई जो इनपुट गुडा का दरकार तार इंपोर्ट हमें करूछु. तो तार इंपोर्ट पई गोटे स्कीम अछि जो थे कि तुमको ड्यूटी फ्री माने टैक्स किछि दबा को पड़ो नाही. से स्कीम रो ना कोन? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम गोटे सुनि थिबो जेटा कि न्यूज रे थिला, हैला? लास्ट 3 मास 4 मास तळे गोटे थिला एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम. सेटा भी ऑप्शन रे अछि बट इज दैट करेक्ट और नॉट सेटा तम ऊपर रहला. Any guesses? Production linked incentive scheme. Okay. Advanced authorization scheme is the answer. Hello. It allows duty free import of inputs which are physically incorporated in an export product. Hello. In addition to any input, packaging material, fuel हला, oil हला, जहाँ भी catalyst दरकार पड़े, production रो process रे जो गुड़ा को सामान सब दरकार पड़े, से सब जिंस गुड़ा को इतने include अच्छी. Okay? Basic custom duty, additional custom duty, जहाँ भी तमरो duty, cess वगैरह अच्छी, से सब से particular scheme रे include अच्छी. तामने ताऊपरे ए सब सेस गुडा को एगुडा तो एबे तुम एते डिटेल रे बुझ परबनी. सेस कोन? टैक्स ऊपर फिर टैक्स पड़िला दैट इज सेस. एटा त हम जानि छु रे. तो ए सब जिंस हमरो सेठी माफ हे जाउची, हैला? सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ए सब जिंस माफ हे जाउची. तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस डबल ए स्कीम और एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम, हैला? जो थरे कि तमरो अगेन से क्वेश्चन को जदि तुम बुझी गलो यू आर गुड टू गो. एक्सपोर्ट पई जहाँ भी इनपुट दरकार ता ऊपर किसी टैक्स पड़ुनी, हैला? सेति पे एडवांस ऑथराइजेशन ता नाटा भी सेमते पड़ी छी, हैला? कहा को एटा इशू करा जाए, हैला? इट इज इश्यूड टू मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर आउ मर्चेंट एक्सपोर्टर.
है जे मैन्युफैक्चर करथबो एक्सपोर्ट जिंस करथबो सेमान को पे भी इशू हबो आउ मर्चेंट एक्सपोर्टर है ट्रेडर्स हु डू नॉट मैन्युफैक्चर देमसेल्व्स बट प्रोक्यूर गुड्स फ्रॉम ए सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर फॉर एक्सपोर्ट तांको हमें मर्चेंट एक्सपोर्टर बेली कहबा इठी ओके जे माने तमरो कोन कहलो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करना तो बट से भी काठो आनी की भी से एक्सपोर्ट करथबो दैट पर्सन विल आल्सो बी इंक्लूडेड okay so it shall be issued for physical export intermediate supply एते डिटेल हमको जानिया दरकार नै तमे बस से स्कीम रो नाटा काइंडली मन रखिबो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन कोन थिला किछ कहि परिबो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन रे भी दीटा ताकू सब डिवाइड करथला ता अंडर रे दीटा स्कीम थिला गोटे स्कीम अंडर रे सब स्कीम दीटा थिला एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम हला तो आज जाई कि देखिबो तमे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम इज आल्सो इंपोर्टेंट जोटा तमरो फर्स्ट ऑप्शन रे थिला ओके एंड देखिबो आ अंडर रे इटा सब स्कीम थिला कि दैट इज योर टास्क ओके एटा तो हबो आंसर ए क्वेश्चन नो आंसर हला एटा ओके बट बाकी जो ऑप्शंस गोटा रहला दैट ऑप्शंस आर आल्सो इंपोर्टेंट एटा को तमे काटि दे पारो बट एटा आ एटा ए दीटा जिनस देखियो केमती प्रोनाउंस करबो यूफ्रेट्स रिवर that was recently seen in news originates in which region Tibetan Plateau Armenian Highland Deccan Plateau Zagros Mountains सुनछ केबे सुनत so this is a Euphrates river हला सीरिया न्यूज रे थिला चल कंटिन्यूअसली सब एरिया गुडा को न्यूज रे इराक ईरान तो न्यूज रे अच्छी ही कोन पे तमने जानथेबो so you see the location of Euphrates river strategically कितने important हाँ एट ईरान एट इराक तमर मझे पूरा फ्लो होची कोन यूफ्रेट्स रिवर जाई कि से मिसुची कोठी पर्शियन गल्फ रे हला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस न्यूज रे अछि सेटा कहा को सेपरेट करे अरबियन सी गल्फ ऑफ ओमान आउ पर्शियन गल्फ को सेपरेट माने कनेक्ट करे कि सेपरेट करे चाहे भी कोई पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर्शियन गल्फ आउ गल्फ ऑफ ओमान हैला आउ ए यूफ्रेट्स रिवर जाएगी तमरो मिसुची कोठी पर्शियन गल्फ रे टाइग्रिस रिवर भी देखुथबो जोटा कि तुर्की रो ओरिजिनेट होची टाइग्रिस रिवर सेटा भी जाएगी तमरो मिसुची पर्शियन गल्फ हैला so Euphrates is one of the oldest and most storied rivers in human history news kon pe thila last week ro because it is disappearing news ta ya कि that river is disappearing slowly हैला धीरे धीरे लिबी माने तारो कोन आउ तमे ट्रेसेस किछि पाउन तो सेति पे तक लोकेशन ता भी जानते दरकार हैला लोकेशन जते बेला हमें कहूछु तारो ओरिजिन ता बहुत इंपोर्टेंट ओके आर्मेनियन हाइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्टर्न टर्की मैप रे भी देखले तमे टर्की रो ही ओरिजिनेट होची ओके बट से टर्की रो को हाइलैंड वर्ता सेटा हमको मन रखार अछि बिकॉज़ ऑप्शन से तमरो ए गुडा को पचारि छी हले तो until and unless you know the exact origin point you cannot answer so Armenian highland answer कोन हेबो Armenian highlands okay news रे कोन पे थिला because it is disappearing slowly so Armenian highland of southeastern Turkey also Turkey भी ऑप्शन रे थाई पारे तुर्की से ताऊ किछि कंट्री भी थाई पारे तो एबर से हाइलैंड डायरेक्टली पचरची कि को कंट्री पचरची सेटा भी हमको मन रखे पड़े it then flows through the countries of Syria Iraq where it meets with the Tigris river and finally drains into the Persian Gulf
ओके तो मैप जितेबाला भी एमती कुछ भी जिनस तुम पढ़ुच न्यूज रे अच्छी तार मैपटा देखीदेव पूरा मन रही सब एग्जाम है ये जाइए तुम मिसुची ये कौटी टिग्रिस रिवर ये गला यूफ्रेट्स गला ये से मीट कर मीट कलापर तुम ये जाइए मिसुंट है देखो जिते ईरान तुम कौन से यूक्रेन युद्ध चलता से रिलेटेड आखपाख जो लेक्स गुड़ाक था रिलेटेड बहुत गुड़ा एग्जाम्स क्वेश्चन पचार तो से रिलेटेड तुर्की सीरिया इराक ईरान ये अच्छी तुम से कैस्पियन सी अच्छी कैस्पियन सी रो भी गोटे जियोग्राफिकल फीचर अच्छी से भी गोटे इंपोर्टेंट जियोग्राफिकल लोकेशन को कंट्री तुम कैस्पियन सी को बाउंड करके अच्छा क्वेश्चन पड़े है तो से जियोग्राफिकल पॉइंट ये सब आम इंपोर्टेंट है पर्शियन गल्फ तुम ये देख लो टाइग्रिस रिवर यूफ्रेट्स रिवर मिसुची ये तुम कुवैत अच्छी ये ईरान अच्छी है ओके तापर ये तुम डिटेल अच्छी यूफ्रेट्स रिवर फ्लोज पैरेलल टू द टाइग्रिस रिवर तापर से माने फॉर्म करंती टाइग्रिस यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम फॉर्म करंती मिसंती तो ऑब्वियसली ancient Mesopotamia which is a part of what is often called fertile crescent fertile माने मेसोपोटामिया टाइम रे ओके से पार्ट टा को फर्टाइल कहा जाउथला फर्टाइल माने बहुत तमर कोन इट्स अ फर्टाइल लैंड होला तो सेठी एग्रीकल्चर वगैरह सब बहुत भलो हेबथा परतो बट सेठी एबे से क्वेश्चन माने न्यूज रे कोन अछि डिसअपियरिंग ओके तो आगुरु एटा गोटे बहुत बड़ फर्टाइल एरिया थिला बट धीरे धीरे तुम एटा डिसअपियर हेबा को लागुची ओके वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिटीज बेबीलोन सुनथिबो बेबीलोन हैला बहुत आगुरु मेसोपोटामिया टाइम रे दैट वाज बिल्ट अलोंग दिस रिवर यूफ्रेट्स रिवर पाखा पाखी बेबीलोन सिटी रा हमरो बना जायतिला ओके some of the world's oldest civilization were established there thousands of years ago. Euphrates receives most of its water from winter rains and snowfall in the mountain. The rest of the land that the Euphrates flow through is dry. इतना हमको important नहीं exam perspective. Geographical location is important. Okay, and obviously origin. ला Armenian Highlands, Turkey. ये तो की मन रखियो. Plus Western Asia's longest river हो चेटा. Okay, Euphrates river. Western Asia रो जोटा बे डिस्टर्बेंस एरिया चलची वेस्टर्न एशिया रो लॉन्गेस्ट रिवर होची यूफ्रेट्स रिवर विथ अ लेंथ ऑफ 2800 किलोमीटर नेक्स्ट रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट Yes. Sikkim. जाइछो केबे? It is located in the Kinnaur district of Himachal Pradesh. है ना पाखा पाखी not in Sikkim but in Himachal Pradesh. ताको सांगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोली भी कहा जाए. ओके कोटा को से नाटा कोन है मैं कहली हां राक्षम चिकुल ताको सांगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोली भी कहा जाए. इट इज माने तार केते हाइट जदि हमें देखिबा जेतु ए सब कोन नॉर्दर्न स्टेट्स गुडा करे सब सी गुडा को बहुत उच्चा रे थाए ना तो एटा भी तमरो 3200 टू पाखा पाखी 5500 फीट हाइट रे अछि हैला. इट इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रेंज. ओके इट इज सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड माउंटेन एक्सेट्रा छाड़ा गोटे बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो लामखांगा पास बहुत गुड़ा माउंटेन पासेस अच्छी हमरो हैला. माउंटेन पास माने दीटा माउंटेन को कटा हेगी रास्ता बना हुए तो लामखांगा पास भी तमरो ए सेंचुरी देई की पास माने ए पासटा बना हेची सांगला सेंचुरी देई की तमरो लामखांगा पास. तो जदि पचारे लामखांगा पास कोठी हिमाचल प्रदेश हैला. तो एमिति सब पासेस गुडा को भी तुमको मन रखे पड़ेबो सब स्टेट रो पासेस कोन कोन अछि. ओके एंड ये जो लामखांगा पास अच्छी इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश टू
उत्तराखंड एटा भी मन रखिबो हिमाचल प्रदेश आ उत्तराखंड को कनेक्ट किए करे लामखांगा पास ओके को टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन फ्लोरा फॉना फाइव सेठी पाओ से जिंस गुडा को इठी मेंशन अछि स्नो लियोपार्ड मोस्टली तमे हिमालयन रीजन रे स्नो लियोपार्ड देखिया को तो पाओ ही पाओ ओके सो आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश हैला रक्चम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट गरुड़ is associated with which sector को sector रो एटा गोटे प्रोजेक्ट बायोडक्ट रो स्पेस टेक्नोलॉजी रो रिन्यूएबल एनर्जी रो या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट गरुड़ कोटा इति भाबछ ना रो टिके गेस तो करि परिबो वेरी इजी गेस करि परिबो जानि न तो के भी गेस कर दबो गरुड़ यान थिबो उडी की जाए तो it is related to space okay so it is a satellite platform program launched by dhruva space होची गोटे स्टार्टअप रो नाम मन रखिबो हला बहुत इंपोर्टेंट dhruva space आजिकली प्राइवेट स्टार्टअप्स माने बहुत आसिले ने जे माने एंत सब नुवा नुवा सैटेलाइट सिस्टम सब बनाउछंती रिसेंटली तमर गोटे बहुत इंपोर्टेंट हेची मिशन और गोटे सैटेलाइट सिस्टम कहि परिबो मिशन दृष्टि हला सेटा भी ध्रुवा स्पेस ही बनै छी ओके सेटा भी इंपोर्टेंट आ ए प्रोजेक्ट गरुड़ एटा भी ध्रुवा स्पेस बनै छी हला आगरो कोन सब इसरो माने सब करथले बट एबे ए जो नुवा स्टार्टअप गुडा कासले ने से माने भी प्रोजेक्ट गुडा को करछन ओके बेसी डिटेल आमे यूपीएससी पई पढुनु तो बेसी डिटेल जानिया दरकार नै बट एति की ओवरऑल तो आईडिया निहाते रहितबा दरकार बिकॉज़ यू डू नॉट नो को क्वेश्चन केते बळ पछे अच्छा it is positioned to bridge the gap between smaller experimental satellite and larger traditional system माने एमते उडे मझा मझिया से सैटेलाइट सिस्टम बनै छी जेमते तमरा कोन छोटो छोटो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट भी माने बहुत छोटो भी सेमति न होई छ प्लस बहुत आगुरु जेमते ओल्ड बहुत बड़ा बड़ा हेवी सैटेलाइट से गुडा को भी न हो हैला अच्छा कैन यू आंसर ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट विषय किछि जानछो ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट ब्लू बर्ड 2 बहुत इंपोर्टेंट ब्लू बर्ड 2 न्यूज रे थिला सुनछ कोन इसरो आपको लॉन्च करथिला हैला दिस इज वर्ल्ड्स हेवीएस्ट सैटेलाइट यूएस रो गोटे कंपनी बनै छी इसरो बनेनी किंतु सेटा को लॉन्च कला इसरो तो वर्ल्ड रो सबटु हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च करिवार रेकॉर्ड भांगिला इसरो हैला से रेकॉर्ड ता आ पूर्व भी इसरो पकरे थिला किंतु बेबी वर्ल्ड रो हेवीएस्ट सैटेलाइट से माने चाहितले नासा पाखु जाई परथांते बट इसरो एटा को लॉन्च कला तो सेति में एटा इंपोर्टेंट ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट हैला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बाय द वे आरो क्वेश्चन एटा तो आंसर हैला स्पेस टेक्नोलॉजी जदी से पचारि भी थांता प्रोजेक्ट गरुड़ को स्टार्टअप ध्रुवा स्पेस सहित तमरा आउ तीनटा ऑप्शंस थांता अग्निकुल एक्सेट्रा इन सारे बहुत सारा कंपनीज अछंती तो ध्रुवा स्पेस मन रखिबो हैला इट इज रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज मेड बाय a startup called Dhruva Space. India's first small and medium enterprise commercial semiconductor chip production unit. Hello. India ro prathamo सब जिनस important. India's first anything is important. India's first small and medium enterprise commercial semiconductor chip production unit कोठी एस्टैब्लिश करा जायछि को स्टेट राजस्थान गुजरात कर्नाटक तमिलनाडु
सेमीकंडक्टर मिशन आमर अच्छी तो से मिशन अंडर एटा बनाई यूनिट टा कोडी बनाई राजस्थान गुजरात कर्नाटका ना तमिलनाडु कुआ तर आंसर नहीं ऑनलाइन जो मैंने देखु जो प्लीज ट्राई टू आंसर गेस मैंने न्यूज फ्यूज देखु ना दाल टिके भल गेस भी कर पारथांता गिफ्ट सिटी गुजरात रे बहुत सारा जिनस बना होचे बे रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स आल्सो सेटी बना होचे ओके तो एटा मन रखिबो एटा डायरेक्टली आ किछि बेसी डीप जिबा दरकार नै इंडिया रे प्रथम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन यूनिट गुजरात रे एस्टैब्लिश कराइछि गुजरात रे प्राय जिनस तो वर्तमान एस्टैब्लिश करा जाउछि ओके लेक ताहो is located in which country सुनछ कबे कौन हम गेस करो कैलिफोर्निया कोठी कैलिफोर्निया टा कोठी यूएस एटा खाली लोकेशन टा मन रखिबो हैला कैलिफोर्निया रो तमर जेटा कि यूएस रे अछि सेठी तमर अछि लेक ताहो ओके थडाउ ट्राइब is primarily found in which state मिजोरम नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा लास्ट क्लास हम पढ़िलु बाइगर ट्राइब विषय क्लास देखु न बोधे यूट्यूब रे ना बाइगर ट्राइब विषय पढ़िलु बाइगर ट्राइब जनरली तमरा मध्य प्रदेश रे देखिया को मिलंती हैला this Baigar tribe they are part of PVTG do you know the full form of PVTG PVTG रो full form हैला particularly vulnerable tribal group माने कौन बुझ ट्राइब तो एमती भी से माने vulnerable condition रे थांती बट आहुरी अत्यधिक खराब अवस्था वल्नरेबल कंडीशन रे भी किछटा ट्राइब थांती तांको हमें गोटे कैटेगरी रे रखू गोटे ग्रुप रे रखू से ग्रुप रो ना हला पीवीटीजी हला पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स से पीवीटीजी तमे जानि थो टोटल इंडिया रे टोटल 75 टा एमिति ट्राइब्स अछंती जो माने कि पीवीटीजी अंडर रे अछंती हला ए 75 रु 13 टा ग्रुप हमर ओडिसा रे अछंती हला ओडिसा रे 13 टा पीवीटीजी ग्रुप अछि माने हमर तो बहुत ट्राइब्स अछंती हला से ट्राइब्स भितरु 13 जण माने 13 टा ट्राइब रो गोष्ठी से माने पीवीटीजीस को बिलोंग करंती हला से मान को पाई ठीक एक्स्ट्रा केयर निया जाय निहाती तांकर लाइवलीहुड केमते हबो कोन हबो केमते से माने आउटे भलो रहि परिबे किछि गोटे स्किल सिखि परिबे निजर लाइवलीहुड मेंटेन करि परिबे ता ऊपर फोकस करा जाय अच्छा सो बाइगर ट्राइब हम लास्ट क्लास पढ़थिलु से मान को माने
कौन गोटे होता ह्यूमन ट्राफिकिंग ना कौन गोटे होता से रेस्क्यू करा तीनटा लोक रेस्क्यू करा दे वर फ्रॉम द बाइगर ट्राइब न्यूज थिला या तो हमको बाइगर ट्राइब टिके डिटेल देखिया पड़थिला एबे सिंती थडाउ ट्राइब न्यूज रे अछि थिला लास्ट वीक थडाउ ट्राइब से माने को स्टेट को बिलोंग करंती सो दे वर बेसिकली न्यूज कोन पे थिला 3 थडाउ ट्राइब चर्च लीडर्स वर शॉट डेड and several were injured after unidentified armed men ambushed their vehicles in Manipur's Kangpokki district recently. So Manipur incident gote heitila. Okay, so this particular people generally tame manku kothi pao India ro Manipur re to pao hi pao as well as in surrounding region encompassing parts of other northeastern Indian states अलगा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स रे भी पाओ एंड म्यांमार रे भी देखिया को पाओ ओके म्यांमार भी हमरो कोन सराउंडिंग हमरो बाउंड्री रे अछि हैला नॉर्थ ईस्ट तो सेठी भी एमन को तमे देखिया को पाओ आउ मणिपुर रे देखिया को पाओ क्वेश्चन कोन पचार थिला व्हिच स्टेट हैला सो थडाउ ट्राइब माने मणिपुर ओके बाइगर ट्राइब जदि पचारला मध्य प्रदेश ओके सांथाली ट्राइब कोडू जानि छ तमे ओडिसा रे बिले ओडिसा जानछ सेमते मणिपुर रे गोटे पिला थिबो से नेत जानथिबो थडाउ ट्राइब तांकर एरिया रे हले त हमको सेमते सब एरिया रे ट्राइब मन को ना भी टिके टिके नॉलेज थिबा दरकार ओके एबे खास करी तमरो निकोबार ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट गोटे चलची हैला सेटा भी बहुत न्यूज रे अछि पाखा पाखी 92,000 करोड़ रो प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार कोठी अंडमान एंड निकोबार साउदर्न पॉइंट रे अछि ग्रेट निकोबार हैला इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया रो सदर्न मोस्ट पॉइंट होछि इंदिरा पॉइंट जोटा कि हमरो निकोबार माने ग्रेट निकोबार रे अछि हैला अंडमान निकोबार आइलैंड दे आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हागे नै सेठु सबुडु साउथ रे अछि हमर ग्रेट निकोबार होछि सबुडु माने बढ़िया जगह ऑब्वियसली माने स्ट्रेटेजिकली तो इंपोर्टेंट बट हमर एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रो भी रिच इन बायोडायवर्सिटी हैला सेही जगह को वर्तमान पाखा पाखी 9-10 लाख ना एमति केते ट्रीज कटा हबो एंड गोटे प्रोजेक्ट हबो चारिटा जिंस सेठी नुआ बना हबो टाउनशिप प्रोजेक्ट हबो गोटे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना जिवो गोटे तमर एयरपोर्ट बना जिवो हैला जोटा कि सिविलियन यूज पे भी हबो मिलिटरी यूज पे भी हबो आ एमति बहुत चारटा जिंस टोटली पूरा बनेबार अछि हैला तो जोति पे कि से माने सेई ट्रीज गुडा को काटिबे निहाती हैला प्लस ग्रेट निकोबार रे तमर ट्राइब्स अछंती ट्राइब रुहंती से माने बेबी सेठी रुहंती से माने बाहर कोठी को बाहरंती नहीं का सत मिसंती नहीं तो जदी ग्रेट निकोबार एमती किछ गोटे प्रोजेक्ट होची तो से लोक मानकर लोकेशन ट्रांसलोकेशन ता प्रॉब्लम हबो हंगे नहीं प्लस जो कोइलु रिच इन बायोडायवर्सिटी से पानी रे समुद्र रे बहुत स्पीसीज अछंती हैला बहुत रेयर स्पीसीज अछंती से मानकर भी हैबिटेट नष्ट हबो तो बहुत इकोलॉजिकल कंसर्न्स अछि बट स्टिल डेवलपमेंट तो करियर अछि ना हैला एम जामे सिम छाड़ दबा कि आउ गवर्नमेंट को होछि कि जेति ट्री कटा हबो से सेति नंबर ऑफ ट्री आउ कोठी कोठी लगा हबो एमते हे कि गोटे पाखा पाखी वर्षे ऊपर हेलानी माने वर्षे कोन 2021 रे स्टार्ट हे माने तमर अप्रूव होला से प्रोजेक्ट ए पर्यंत किछि हे पारु नाही माने केते भाबो न्यूज रे एटा कंटीन्यूअसली अछि तो सेति में ग्रेट निकोबार एरिया टा इंपोर्टेंट सेठी को ट्राइब माने अछंती हैला सेटा भी इंपोर्टेंट हे जाउछि हैला तो करंट अफेयर्स माने नुह कि हमें बस लास्ट वीक रो करंट अफेयर पढ देलु हेगला जो जागा न्यूज रो अछि सेठी को ट्राइब माने रहंती केबे तमे तमरो टारगेट तो खाली गोटे छोटो एग्जाम रहबा कथा नुह गोटे बड़ एग्जाम भी नियत रहबा कथा तो सेति पे तमे जत्ते बेले पढछु ठीक डीप जाई कि पढ देले तम पे भलो हैला ओके तो आर आंसर तो हेगला मणिपुर थर्ड आउट ट्राइब मणिपुर okay next which ministry launched the intellectual property catalyst initiative
କିଏ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ? Commerce and Industry, Science and Tech, Electronics and IT, Micro, Small and Medium Enterprise, MSME. कौन है आंसर? Commerce and Industry. Why? Logic कौन? MITI, Ministry of Electronics and IT. Intellectual property माने कौन? Intellectual property माने कौन? तमरा सिविल सर्विस रे आईपीआर बेले गोटे अछि, गोटे सिलेबस रे गोटे पोर्शन अछि। साइंस एंड टेक सहित आईपीआर गोटे अछि, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ता माने कोन? ता माने तमे गोटे जदी नुवा जिंस किछि बनौछ हैला, तार राइट्स जो पैटेंट सुनिथिबो त माने पैटेंट फाइल करबा। मन करो मु गोटे नुवा इन्वेंशन किछि गोटे कली हैला, तो तार पैटेंट मते फर्स्ट फाइल करिया को पड़िबो। माने से जिंस ऊपर मोर ही हक अछि, सेटा जदी काली बिक्री हला तार किछि परसेंटेज रेवेन्यू मते आसीबो। काली को किया न लाउ के कहि दबो कि ना एटा तो मु बनैतिली, एटा मु बनैतिली, एटा मु बनैतिली एमते आसीबो। तो जे पर्सन तमे गोटे नुवा इन्वेंशन करि जाओ तार पेटेंट फाइल करना, देन तमे से इन्वेंशन करिना हैला। तो सेटा आसे तमरो इंटरनेशनल कोन एटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अंडर रे पैटेंट वगैरह केमिति पैटेंट फाइल करबो, तमरो केमती गोटे राइट हे परिबो। पैटेंट रो फिर थाय लाइफ टाइम 40 वर्ष पर ताकू भी रिन्यू करिया को पड़े। जेमते बे जीआई टैग गुडा को हमें लगौछ, जीआई टैग ऊपर तार भी किछि गोटे लिमिट अछि, एमते न के लाइफ टाइम में सेटा रहउछ। सेमते पैटेंट गुडा को भी किछि लिमिट थे हैला। कैटलिस्ट माने एक्सेलरेट करे। कैटलिस्ट काम कोन? गोटे रिएक्शन होची, तमे कैटलिस्ट यूज करछु सेठी, ता काम कोन? एक्सेलरेट करेबो से प्रोसेस टाको। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटलिस्ट इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री लॉन्च कला, तो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। एटा मन रखियो मिटी हैला, मिटी। तो तार गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी से ओपन करछि हैला, सेटा भी मन रखियो। ओके, नेक्स्ट देखिए हम। Which tiger reserve has been selected for establishing? Again, India's first is important. India's first human elephant conflict research center. मनीष आउ एलिफेंट रो conflict research center establish हेची ए चारिटा भितर गोटे टाइगर रिजर्व रे। सॉरी कोडी नो आइडिया। इंडिया रे टोटल केतरा टाइगर रिजर्व अछि? इंडिया रे 7टा अछि। 58 टाइगर रिजर्व्स इंडिया रे अछि। से भितर ओडिसा रे केतरा अछि? केतरा अछि? ओडिसा रे कोन कोन अछि कहलो टाइगर रिजर्व? सिमलीपाल पचारछ ना कहूछ? सो ओडिसा रे दीटा अछि, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सातकोशिया टाइगर रिजर्व हैला। देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व भी हबार अच्छी प्रोसेस रे अच्छी, बट एपर्यंत ऑफिशियली अनाउंस कराइनी। तो सातकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हैला। आ गोटे तमर अच्छी सुनाबड़ा जानछ
कोरापुट हैला सुनाबड़ा टाइगर रिजर्व गोटे अच्छी बट सेटा सुनाबड़ा रे नहीं आमर सुनाबड़ा रे नहीं छत्तीसगढ़ रे भी गोटे सुनाबड़ा अच्छी हैला एटा कंफ्यूज होबन गोटे छत्तीसगढ़ रे सुनाबड़ा अच्छी सेठी गोटे तमर सेटा भी न्यूज रे थिला रिसेंटली सेति पे मु कहूची सुनाबड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ हैला तो कहीं ना हमरो जदि तुम जानि नथिबो ओडिसा रे दीटा ही टाइगर रिजर्व देन तुम भाबी देबो सेटा ओडिसा रे बेली ओडिसा रे वर्तमान दीटा ही टाइगर रिजर्व सातकोशिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इंडिया रे टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैला प्रोजेक्ट टाइगर केबे लॉन्च हेतिला प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट लायन प्रोजेक्ट एलिफेंट समस्त ईयर मन रखा भी इम्पोर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन आछी और मैच द फॉलोइंग भी आसी पारे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट लायन प्रोजेक्ट एलिफेंट जानछ प्रोजेक्ट टाइगर खाली को एटा तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट टाइगर एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन प्रोजेक्ट टाइगर केबे लॉन्च हेतिला नाइंटीन 73 है मन रख बिकज पाखापाखि केते वर्ष हो गलानी 50 इयर्स क्रॉस कर सारानी है प्रोजेक्ट टाइगर को तो से इम्पोर्टेंट है तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता 1973 प्रोजेक्ट लायन केबे कहि परिबो प्रोजेक्ट लायन रिसेंट हेतला प्रोजेक्ट लायन और हिंट देली मु रिसेंट हेतला प्रोजेक्ट लायन लॉन्च 2020 रे हला आ प्रोजेक्ट एलिफेंट मन रखिबो 1992 ओके आ गोटे प्रोजेक्ट भी अच्छी प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड भी अच्छी तार ईयर भी मन रखिबाटा इंपोर्टेंट हला किछि आइडिया स्नो लियोपार्ड टा केबे हितला 2009 स्नो लियोपार्ड 2009 ना ए सब कोन पे कहली मु बिकॉज रिसेंटली लास्ट वीक तमर गोटे इंटरनेशनल बिग कैट समिट हेछि बिग कैट समिट रिसेंटली हेछि कोठी न्यू दिल्ली रे हेथिला लास्ट वीक माने किछि दिन ही हेछि इंटरनेशनल बिग कैट समिट बिग कैट अंडर रे माने सब आसीबे माने एलिफेंट तो आसीबेनी ऑब्वियसली टाइगर लायन स्नो लियोपार्ड हैला ए माने सब बिग कैट अंडर आसीबे ओके तो सेटा से समिट रिसेंटली दिल्ली रे हेथिला अच्छा सो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 मन रखिबो प्रोजेक्ट लायन 2020 प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हैला ए सब कोन पे हिथिबो ऑब्वियसली सेमानकर कंजर्वेशन पे हैला सो क्वेश्चन हमर थिला कि इंडिया रे प्रथम ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर ए चारिटा टाइगर रिजर्व रो को टाइगर रिजर्व रे सेटअप कराई जाई छी हैला कोठी झारखंड रे तमर अछि पालमू टाइगर रिजर्व इंडिया रे तो टोटल केतरा 58 टाइगर रिजर्व्स हैला तो 58 टाइगर रिजर्व्स रू भी जदी किछि न्यूज रे अछि सेटा इंपोर्टेंट so Palamu Tiger Reserve is in Jharkhand. Okay, Palamu Tiger Reserve is a historic biodiversity reserve located in Chota Nagpur Plateau region of Jharkhand, India, constituted initially as a protected forest. गोटे protected forest हिसाब रे से स्टार्ट हेतिला के जेबे आमे आजाद हेतिलु 1947 रे
It holds a pioneering status in global wildlife conservation as one of the original 9 tiger reserves created at the launch of Project Tiger in 1974. Actually 73 ହେଇଥିଲା but ସେଇ ଆଖପାଖ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଏପ୍ରିଲ 1973 ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ 58 ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହେଇଯାଇନି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ 9ଟା ଅରିଜିନାଲ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଥିଲା ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ତା ପରେ ପରେ ସବୁ 58 ଟା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆଡ୍ ହେଲା ବଟ୍ ଅରିଜିନାଲି ପାଲାମୁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ वाज देयर ହେଲା ସୋ ତାର ଲୋକେशन इंपोर्टेंट झारखंड ର ମନେ ରଖିବ एंड ସେଇଠି ତମର ଗୋଟେ India's first AI powered human elephant conflict research center तमरा सेटअप होबार अछि ओके सो आंसर विल बी पालामू टाइगर रिजर्व ओके एंड ए सबु बाकी गुडा करो लोकेशन इंपोर्टेंट जानिथिबा दरकार कान्हा टाइगर रिजर्व सुनथिबो कोठी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सब सिक्किम केनते हबो कान्हा टाइगर रिजर्व हाँ नागरहोल टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेशन गुडा जानथिबा कथा के न त माने आउ तम काम सेटा मु बसी एटे कहबी कोठी सब अछि नागरहोल ता तो बुझी परथबो साउथ रे अछि कोठी गोटे हला कान्हा टाइगर रिजर्व तो जानिथिबा कथा Why? Because कान्हा लिखा है जी फालतू reason. अच्छा, how do you pronounce this? Secrus tu n silent, Secrus henshoniu, whatever. हला, ये दीटा ना. They were recently seen in news. से माने को species को belong करंती. हला, spider species, frog species, snake species और lizard species. Secrus tu, Secrus henshoniu. So they belong spider species है एटा तमरे spider species को माने belong करंती तो मन रखिबो they are from spider species okay so these are the two newly discovered spider species from the genus Secrus okay they are a group of spider belonging to the family Cichridae commonly known for constructing large horizontal sheet webs in moist forest habitats. Both species were discovered in Nagaland and named after the villages where they were first documented. है तो नागालैंड से मैंने फाइनल तो नाटा सेमती कोन पे पड़ला जो भी स्पीसीज रो नाटा लोकेशन वाइज निहाती गोटे पार्ट तार पड़े हैला तो दे आर फ्रॉम जीनस कोन सेक्रुस तो सेक्रुस तो रहला ता सहित एटा हला से जागार ना एन2 और 2 कहि परिबो व्हाटएवर आउ फेंशनियो एटा हला नागालैंड रो दिटा जागार ना जेतु एठु से मन को फर्स्ट डॉक्यूमेंट करा गला सेति पे तांगर ना कोन पड़ला Secrus is the genus name, family name, and 2 is the location name. Simply, Secrus Fenshoniu is the location name, which is in Nagaland. Okay. India's first AI-enabled block-level monsoon forecasting system was launched by which organization? It is easy. को ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करिछि तमरो इंडिया रे प्रथम एआई एनेबल्ड ब्लॉक लेवल रे मॉनसून फोरकास्ट करिबा सिस्टम ता इसरो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल वाटर कमीशन एटा तो हबनी कैंसिल एलिमिनेट करी कि तमे एटा करि परिबो देन रहला बाकी तीनटा भी सेंट्रल वाटर कमीशन रही गुडा काम नुह मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम से करबानी बाकी रहला ए दीटा भीतर टिके कंफ्यूज हे परिबो
मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम कामटा कहार करिवो सी माने किए करिवो मेट्रोलॉजी डिजास्टर कामटा कोन से डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर रिलीफ जिंस गोटा करिवो बट एमिति जदी एआई लेवल रो गोटे हमें सिस्टम बनौछु गोटे एस्टैब्लिश करछु एटा किए करिवो ऑब्वियसली इंडिया मेट्रोलॉजिकल आईएमडी डिपार्टमेंट एटा लॉन्च करछि okay India's first AI enabled block level monsoon forecasting system. The report titled India's Nuclear Energy Vision. से रिपोर्ट रो ना हला एटा इंडियास न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रेटेजिक पाथवे फॉर एसएमआर डिप्लॉयमेंट से रिपोर्ट रो ना ए रिपोर्ट टा किए रिलीज करिछि रिसेंटली रिलीज करथिला किए रिलीज करथिला नीति आयोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क एनर्जी दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जोटा को तेरी बेली भी तमे सुनिथिबो हला एटा हला बार्क आउ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ए चारिटा भितरु किए तमरो न्यूक्लियर रिलेटेड गोटे रिपोर्ट बाहर करथिबो तेरी रो काम कोन बाहर के रिपोर्ट काई दबो दे भी पारे किछि कहबनी बट रिसर्च कोन हेता एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ओके जनरली रिपोर्ट्स गुडा को किए दियंती इंस्टीट्यूट्स एठु भी तमे टिके गेस वर्क करके भी करि परिबो हैला बट जब तमे केबे भी आकु एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कोन थबो एमति भाबते बट मु शॉर्ट फॉर्म से इतने लिखली तेरी बिकॉज़ हमें मोस्टली एटा सुनी छै नाटा तेरी ओके आउट रिपोर्ट भी तमे जाय कि घरे तमर काम हला देखिबो सिप्री रिपोर्ट किए दिए दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट ओके सिप्री रिपोर्ट रे तमरो सब कंट्रीज रो का पाखरे केते न्यूक्लियर वेपन अछि केते के बनै छी लास्ट ईयर रे केते कोन से यूज करछि कि माने यूज तो के करन नै बट केते बनै छी कोन इंडिया पाखरे केतरा अछि चाइना पाखरे केतरा अछि पाकिस्तान पाखरे केतरा अछि सेही जिंस ओडा तमे सिप्री रिपोर्ट रो पाओ तो सिप्री रिपोर्ट ता के बनाए सेटा देखिबो एटा होछि तमरो ए जे रिपोर्ट ता इंडियास न्यूक्लियर एनर्जी विजन एटा तमरो के बनै छी Terry. The Energy and Resource Institute released the report India's Nuclear Energy Vision. The report states that India will require 23 to 25 lakh crore investment to achieve the 100 gigawatt capacity by 2047. Amar eta target हैला जेमती गोटे नेट जीरो टारगेट हमर गोटे अछि इंडिया रो अचीव करबार अछि तार ईयर केते नेट जीरो रो ईयर केते कि बाय एते कि हमगु किछि एमिशन जीरो एमिशन करबार अछि तार गोटे ईयर अछि जेमती विकसित भारत रो ईयर सेम 2047 बाय द एंड ऑफ 2047 हमें डेवलप्ड नेशन हे जिबो बोले हमर टारगेट अछि सेमिति नेट जीरो एमिशन करबार भी गोटे टारगेट अछि तार भी गोटे ईयर अछि केबे 2070 हैला एटा भी मैच द फॉलोइंग करके पचरी पारे तो नेट जीरो टारगेट हमरो बाय 2070 अछि आ एटा भी गोटे टारगेट रो पार्ट न्यूक्लियर सेक्टर रे एटा टारगेट बाय 2047 हमको एतिके गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करियार अछि को एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करियार अछि ओके रिसेंटली तमर आउट न्यूज थिला कल्पक्कम सुनछो कल्पक्कम पावर प्लांट अछि हैला तमिलनाडु रे सेठी तमर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रो प्रोटोटाइप फाइनल नो प्रोटोटाइप रे क्रिटिकलिटी अचीव हेथिला एटा इंपोर्टेंट न्यूज हैला तो लोकेशन तो तुम मन रखिबा कल्पक्कम तमिलनाडु रे तमरो इंडिया फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रो प्रोटोटाइप ता क्रिटिकलिटी अचीव करथिला क्रिटिकलिटी माने हैला
कि चेन ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस हे पारुची हेलो चेन ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस हे पारुची अचीव करि पारला सी ता माने एटा जदी हमरो देखो न्यूक्लियर पूरा भीतर तुम जाई परिबे ना ओवरऑल कहूची इंडिया रो न्यूक्लियर प्रोग्राम तीन भाग रे हम डिवाइड करिछु हेलो प्रथम हैला तमरा प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जोटा कि बहुत आगुरु अच्छी बहुत बड़ बड़ तमर सेटअप गुडा के दरकार पड़े हैला जो एनसी थ्रू तमर कोन बाहर बेसिकली हमको दरकार कोन यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी कहले माने हमको यूरेनियम दरकार यूरेनियम ता हम पाखरे त नहीं इंडिया पाखरे यूरेनियम नहीं तो आमे बाहर देश रु कोन करछु इंपोर्ट करछु यूरेनियम आम पाखरे अछि कोन थोरियम हैला एबंडेंटली अछि थोरियम बट थोरियम आमे फर्स्ट जो कहली तीनटा स्टेज अछि इंडियास न्यूक्लियर एनर्जी रा हमरो तीनटा स्टेज अछि फर्स्ट सेकंड थर्ड थोरियम ता हमें केबे यूज करि परिबा थोरियम ता हमें थर्ड स्टेज रे यूज करि परिबा हैला तो प्रथम स्टेज हैला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जोठु के हमें यूरेनियम बाहर आने की ही हमको यूज करे को पड़िबो इंपोर्टेड नेचुरल यूरेनियम हमें यूज करिबा सेकंड स्टेज हैला एटा जोटा कि न्यूज रे थिला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रे तमरो आर जो वेस्ट बाहरला ना तमे ताको यूज करके भी एनर्जी प्रोड्यूस करि परिबो टिके कम यूरेनियम लागिबो एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेज यूरेनियम एते कम लागिबो आ आर जो बाय प्रोडक्ट आर जो वेस्ट हला ताको तमे एट यूज करलो एट फिर जो जिंस तो बाहरला ना प्लूटोनियम बाहरे हला टू बी स्पेसिफिक प्लूटोनियम को तमे अगेन स्टेज 3 रे यूज करिगी एट फिर जहा वेस्ट बाहरला प्लूटोनियम ए सब यूज करिगी प्लस ए थर्ड स्टेज रे हम थोरियम यूज करि परिबा थर्ड स्टेज हबा पे हम तक आहुरी बहुत टाइम अछि हला थर्ड स्टेज को जीवा पे माने बहुत दूर स्वप्न सेटा हला एबे हम स्टेज 2 रो ए स्टेप पे अचीव करिछु सेटा भी प्रोटोटाइप रे जदि एटा हमरो गोटे फाइनल माने बनै कि हम सक्सेसफुल हे गेलु देन हमरा एमिटी रिएक्टर बहुत गुडा हम बनेबा तो ये सब बनैले हबो कोन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करियो बिकॉज़ ए जो टारगेट अछि ना 100 गीगावाट तमे जानि छ हम वर्तमान को स्टेज रे छु हम पाखापाखि 8.5 गीगावाट ही करि परिछु हैला बट हम टारगेट केते बाय 2047 100 गीगावाट करिबा केमती हमको ये सब ये तीनटा स्टेज न हले दीटा स्टेज को हमें सेकंड स्टेज तक तो रैपिडली यूज करे को पड़ेबो बहुत सारा एंटी रिएक्टर्स हमको बने को पड़ेबो अलग अलग जगह हैला तो दिस वाज योर ये तो ए सब रिपोर्ट तमरा थिला कोन डाटाटा ये रिपोर्ट कोन कहूची कि इंडिया को केते करोड़ इन्वेस्टमेंट दरकार पाखापाखि 25 लाख कोटी रो इन्वेस्टमेंट दरकार हमको ए टारगेट को रीच करिया पे हैला it emphasizes the role of small modular reactors इनके बहुत सारे small modular reactors हमको बनेवा को पड़ेबो in ensuring clean energy grid stability etc India currently operates 25 nuclear reactor हम पाखरे वर्तमान 25 टा nuclear reactor अछि with around कहली जहा तुमको पाखापाखि 8.8 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी वर्तमान अछि से जिंसटा को एतिकी आनिया पे हमको एतिकी कोटी रो इन्वेस्टमेंट दरकार So union budget allocated 20,000 crore for SMR research and deployment, targeting 5 indigenous SMR by 2033. तो by 2033 हमारा टारगेट अछि कि हमें 5टा बनेबो हैला ता पई यूनियन बजट रे हमरा एतिकी crore allocate हेतला ओके so this entire report is in कोटा India's nuclear energy vision report जोटा कि के बनै छी Institute PERI हैला the Energy and Resources Institute okay नल तमे जानिबो केमते माने मु जते मु स्टोरीटा कहबिनी कि हम यूरेनियम अछि थ्योरम अछि हमरा तीनटा स्टेज अछि प्रोटोटाइप कोन रिएक्टर कोन गोटे क्लास रे तमे बुझि गेल नै बट एटलीस्ट गोटे आईडिया त आसीबे ना कि काहे कि हमको रिपोर्ट दरकार कि सब बनेला हम कोन मिलछ से ओके Agalega Islands recently seen in news for their strategic importance in the Indian Ocean belong to which country? So at least हम एते के जान जोली they are located in the Indian Ocean
island located in the Indian Ocean. But को country को से माने belong करती. These all are our neighboring countries. श्रीलंका, मॉरिशस, सिचेल्स, मालदीव्स ये सब our neighboring country. But ये जो अगल island टा को country को belong करती. So this is your Aggalega island. को country को belong करुछि लोकेशन देख पारछो तो दे आर टू आइलैंड बेसिकली एटा गोटे दीटा पेयर ऑफ आइलैंड्स हैला एठी रहला तमरो मॉरिशस एठी अछि मालदीव्स हैला एटा तमरो मादागास्कर एटा हला सोमालिया एटा हला इंडिया जाय कि एठी ओके तमे एमन को कंट्री रो हमें कहि परिबा क्वेश्चन तो हमको से पछछि ना दिस आर फ्रॉम व्हिच कंट्री It lies approximately 1050 kilometer from north of Mauritius. Mauritius रू भी से केते दूर तमे देखो आ इंडिया रो साउथ वेस्ट जदी हमें देखिबा ता 3500 किलोमीटर दूर हला तो कोड आइतबो माने मैप देखि कि तो तमे कहि परिबो ना एटा को एरिया रो हमर कोन कोन ऑप्शंस अछि श्रीलंका तो बहुत दूर हला मॉरिशस सेचेल्स ए मैप रो तमे देखा पनो सॉरी मालदीव्स और सिचेल्स तमे देखि परनो बट मॉरिशस ओके इंडिया हैज अपग्रेडेड द एयर स्ट्रिप एंड जेट्टी at Agalaga Island, which is a strategically located Mauritian dependency in the Indian Ocean. Okay, so question ये थिला कि से को country को belong करूची, but news कौन थिला? It is becoming a key part of India's strategy to strengthen its naval presence and monitor important trade routes in the Indian Ocean. है तो तारो लोकेशन टा because से फिर हमको हेल्प निहाती करबो सेठी जदी हम किछि उडे बनू एबे तो चली छि प्रॉब्लम ना स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद अछि ये सब बंद अछि तो हमको अल्टरनेट रूट सब खोजिया को पड़िबो इंडियन ओशन रे तो सेटा हम सेटा केमते यूज करि परिबा सेटा हला कथा तो अगलगा आइलैंड आर टू आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशन इट इज सराउंडेड बाय सीचेल्स टू द नॉर्थ ओके the Maldives, the US-based Diego Garcia Chagos Island to the east. तारो ईस्ट रे एगुड़ा सब अच्छी आउ तारो नॉर्थ रे सिचेल्स अच्छी सिचेल्स हमर कोठी इंडिया पाखापाखी ही अच्छी सिचेल्स हला फुल मैप टा तो एठी ना एठी तमर अच्छी जदी देखिबो देखि परबो एंड मादागास्कर कोरी देखा होची मादागास्कर एंड द Mozambique channel and the entire eastern coast of Africa to the west. हला अगलगारो वेस्ट रहेला मालदीव्स सॉरी मादागास्कर अगलगारो नॉर्थ रहेला सिचेल्स नॉर्थ रे ही मालदीव्स तमरो कोन कहबे बेटा एठी रहेला तमरो मालदीव्स हला एंड इंडिया तो रहेला एठी ओके आ नॉर्थ ईस्ट आडू को तमरो कोन रहेला एगुडा को सब हला ये सब रहला सो टिके एटा तमरो एठी गोटे एयर स्ट्रिप अछि हैला तो इंडिया ताको अपग्रेड करछि न्यूज़ एटा थिला इंडिया हैज अपग्रेडेड दिस एयर स्ट्रिप व्हिच इज एन आइलैंड तो से आइलैंड रो फिर अगेन जदी हमें लार्जर व्यू देखिबा अगलेगा आइलैंड रो एटा हला साउथ अगलेगा आइलैंड हला साउथ पोर्शन ता से आइलैंड रो जोटा तमे देखुछो एंड सेठी ऊपर को हमें एयर स्ट्रिप गोटे बनैछु हला हमर सामान सब ये करिया पे so archipelago comprises two low lying coral island north island main island और south island हला से एंटायर आइलैंड को फिर माने एमते डिवाइड करा है एते डिटेल जानिया दरकार नै
तमें बस मन रखी तो तार टिके लोकेशन इंडियन ओशन रे लाई करे मॉरिशस मालदीव सिचेल सब आख पाखे अच्छा है तो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन निहाती रोज सो आर आंसर कौन हम दे बिलोंग टू मॉरिशस है बट आख पाखे सब अच्छा ओके तो से कन्फ्यूज करिया को ये क्वेश्चन गुड़ाक Binsar Wildlife Sanctuary is located in which state? It is located in Kumaon region of the Himalayas in the Almora district of Uttarakhand. है तो ऑप्शन रे कौन थिला उत्तराखंड थी निहाती गुजरात महाराष्ट्र उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सो बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन उत्तराखंड okay it is perched at an altitude ranging from 900 to 2500 meter from 0 point also known as Jhandi Dhar which is highest point in the sanctuary. The Himalayan peaks of Kedarnath, Chokhamba, Sivling, Trishul and Nanda Devi are visible among any others. है तो हमको बस लोकेशन टा important. Next the last question कर दबा तबर विलेन. A new plant species named Melanoceris pendrai. Okay, so this is a plant species. This was recently discovered in which state? Sikkim is in option now. Sikkim, Tripura, Assam, Arunachal Pradesh. अच्छा सिक्किम हो जो सिक्किम रो recent news कौन थिला 50 years of statehood. State बहुत कष्ट से गोटे स्टेट है स्टेट रो मान्यता पाई तो तार 50 वर्ष कंप्लीट रो सेलिब्रेशन चलथिला जोठी कि मोदी जाइथिले ये सब न्यूज रे थिला है सिक्किम रे कौन कौन पासेस अछि माउंटेन पासेस नथुला जलेपला है नथुला जलेपला आ गोटे भी अच्छे मत ना मन पड़ने बट मोस्ट कॉमन है ये नथुला जलेपला इजी टू रिमेम्बर ओके अच्छा यही स्पेसीस टा कोठी हमें रिसेंटली देखिया को पाइछु सिक्किम ओके इट इज अ न्यू प्लांट स्पीसीज फाउंड एट एल्टीट्यूड्स at over 4000 meter in Sikkim. It is a genus of flowering plant belonging to the family Asteraceae. Its native range is Iran to southern central China and northern central Indochina Java. है तो ये सब रीजन रे हमें ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज को देखिया को पाओ ओके किसी डाउट अच्छी देखो वेदर फोरकास्ट तो आम एंटायरली कंट्री लेवल भी करि परिबा गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल भी करि परिबा हैला बट सब जगह समान परिस्थिति देखा जाउछि कि हमर भुवनेश्वर तुम निजे देखो गोटे जगह वर्षा होछि आ गोटे जगह वर्षा होनी तो हमको छोटे छोटे जगह को देखिया को पड़ेबो जानिले ही आमे फिर किछि वार्निंग जो तुमको मिलुछि हैला तुमको वार्निंग मिलथि वर्षा हबार एंड बट एंटायर डिस्ट्रिक्ट को तुम पट्टी दबो कि वर्षा हबार अछि बट कौन फायदा तुमको से पर्टिकुलर लोकेशन टा जानियार अछि ना तो सही एबे जीपीएस वगैरह एते सब एनेबल हे गलाने हैला एते फैसिलिटीज हम पाखरे अछि एआई अछि ये सब को यूज करिके हमें केमते गोटे ब्लॉक लेवल रे वेदर फोरकास्ट करि परिबा सेटा से ब्लॉक ऑब्वियसली से ब्लॉक रे जो माने रहितबे तांको मानको पे हेल्पफुल हो ओके तो ब्लॉक लेवल माने सेठी तांके किछि गोटे निहाती लगेथिबे इंस्ट्रूमेंट्स गुडा को लगेथिबे
एआई रो यूज करछन्ते तांके एआई पावर्ड सेति में कुआई छी हैला जीपीएस सिस्टम वगैरह सब लागि थिबो ब्लॉक लेवल रे हैला आउ तो बाकी सब होची जेमते हमरो सेंट्रल लेवल रे भी होची माने स्टेट लेवल रे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे सब जिंस होची ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू